अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुकिंग विद आमना किचन में आपके लिए चिकन टिक्के की रेसिपी लेकर आए हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए सुर्ख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कचरी पाउडर हाफ टी स्पून, टिक्का मसाला पाउडर 3 टीस्पून, हरी मिर्च कुटी हुई हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, घी 1 टेबलस्पून, चिकन 600 ग्राम। अब हम सारे मसाला चाट को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा से मैरिनेट हो जाए। अब हम चिकन को वुडन स्टिक्स पर लगा लेते हैं। अब हम एक ग्रिल पैन लेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। चिकन टिक्का स्टिक्स को ऐड करेंगे और इनको साथ साथ ग्रीस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाएं।
अब हमारा टेस्टी चिकन टिक्का तैयार है।